So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss a very important topic, and that is the Three Anglo-Maratha Wars. Now, this is important specifically because we have MS set exam very near, and of course, it is related with the state of Maharashtra. So of course, this becomes slightly more important for those who are attempting. Otherwise, in general, also these are asked in other exams also, because of course it is a very important aspect of history. So am I audible, visible? Is everything fine? If yes, then please write yes in the comments. Is my voice clear? Yes. Okay. So let us begin. We'll be discussing about the years. तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? सबसे पहले we'll be studying from exam point of view. ठीक है? So सबसे पहले ये चीज, because of course if we keep on going in detail about each and every aspects or each every points of Anglo-Maratha War, it is very difficult to remember also, because there are many treaties, many wars, उसमें बहुत छोटी-छोटी बहुत सारी बातें हैं. सब कुछ याद रखना पॉसिबल भी नहीं है. तो जो एग्जाम में जो पूछा गया है जिस टाइप के क्वेश्चंस या जो prominent treaties हैं, which are the famous treaties or wars, we will discuss that point only. ठीक है? So that you should be able to remember, because याद भी तो रखना है ना. ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको कुछ भी नहीं याद रहे, है ना? So that is what is also important. We have to be very specific while studying these things. Yes. Good evening, Priyanshi Goel, Dharini, Krishi Sachdeva. You all are welcome to the class. So let us begin. So first of all, please subscribe to the channel if you have not subscribed yet. Or इसके अलावा if you are attempting MHCT, then you should watch other classes also. If you have not watched, तो आप live section में जाओ, go to the live section, watch this class, all famous battles of medieval India. ये live section में मिल जाएगा. This is very 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 important if you are attempting MHCT. बल्कि अगर आप जामिया, AMU, कोई भी और एग्जाम दे रहे हैं MHCT, then of course this is very 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 important. ठीक है? ये एकदम देख लीजिएगा. इससे क्वेश्चंस आते हैं, वो इस तरह पूछते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे देंगे, फिर बताएंगे कौन सा बैटल कब हुआ. ये वाला देखिएगा. प्लस व्हाटएवर आई एम डिस्कसिंग टुडे, जो आज भी बैटल्स डिस्कस करेंगे, बैटल्स या ट्रीटीज, वो भी इंपॉर्टेंट होगा. सो ये दोनों इसी के साथ पढ़िएगा ना. सो यू शुड रीड ऑल द फेमस बैटल्स ऑफ मेडिवल इंडिया. इसमें मैंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बता दिया है. ठीक है? बिकॉज दिस इज आल्सो रिलेटेड विद मराठा, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड देयर. सो आई बिलीव दैट यू शुड बी नोइंग. ओके, then acha, please tell me, the third battle of Panipat happened between which two parties and in which year it happened? Please tell me. देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है, बताइए. Because I expect you to know this. और ये important इसलिए मैं बोल रहा हूँ. Anyone? I am waiting for the response, because the three battles of Panipat are very, very important. I am giving you 30 seconds. Yes, Marathas versus Ahmad Shah Abdali. In which year? Dharini? Yes, you are right. Year भी बता दीजिए. 1761. Yes, Priyanshi Goel. Diya, you are right. हाँ, good. So इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ाई किया है. 1761 Marathas versus Ahmad Shah Abdali. Yes, Nandini, you are right. ठीक है. So इसका मतलब आप लोग पढ़े हो. ठीक ठीक, good. Fair enough. So ये और दूसरा ये इधर दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस आए हैं. So please go and watch this one also, दिल्ली सल्तनत. और एक और है, लाइव सेक्शन में जाके देख लेना, विजयनगर एम्पायर, because this is also a topic related with history where questions are being asked. This is near to Karnataka. तो कर्नाटका और महाराष्ट्र बगल बगल में ना, पड़ोस में. So of course these are very attached to each other, like Maharashtra and Karnataka. So of course they can ask questions from there. एक और अगर आप चाहो तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, यूएस ईरान न्यूक्लियर डील, बट स्टिल यू कैन नो इट बिकॉज इससे पास्ट में डील हुआ था, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, व्हिच आल्सो आई हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास. ठीक है? नाउ वन मोर थिंग, आप ये बताओ, आज को टुडे इज 21 अप्रैल एंड दिस इज सेलिब्रेटेड एज व्हाट? व्हिच डे? कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज एमएच सेट में डेज एंड थीम्स काफी पूछते हैं. एमएच सेट में डेज एंड थीम्स, themes नहीं पूछते हैं, days पूछते हैं generally. Themes they are asking less, but days they ask, and I have made a separate video on these. तो अगर आप चाहो तो इसको सर्च करना, important days career launcher, you will get this video, watch it. ठीक है? By the way, today is 21st April. Which day today? कोई बता सकता है? Civil Servants Day. Yes. Why it is National Civil Services Day? Civil Services Day. Yes, now you're right. Because actually on this day,
Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister of India or the first Deputy Prime Minister of India, addressed the newly appointed IAS officers in 1947. Okay, so that is what you should be. Address newly appointed administrative service officer in Metcalfe House, Delhi में Metcalfe House है. और अच्छा आपको पता है, now there's a history question. There's a person called as Charles Metcalfe. He was actually the Governor General of India in the past, and he is famously called as what? Liberator of press. ये भी क्वेश्चन कहीं बहुत फेमस एग्जाम में पूछा हुआ, liberator of press. I have seen in different exam this question because he eased the law related with press. तो प्रेस के कुछ नियम को उन्होंने चेंज आसान कर दिया था. That is why that governor general was called as liberator of press. ये भी पूछा आता है तो मैंने बता दिया. Okay, हाँ, Charles Metcalfe. Yes, दिया, very good. हाँ. Now one more thing, आज 21st है, 3 दिन बाद 24th अप्रैल है. What is 24th अप्रैल famous for? 3 days later. You will tell me this, and thereafter we will start the Maratha and all, Maratha Wars. 3 days later, we are having something happen in 1992 or 93 में हुआ था. The something special happened. What is that? 24th April. Why it is famous? Panchayati Raj Day, National Panchayati Raj Day. Yes, very good. Because on this day, 73rd Amendment came into force, etc. And actually Panchayati Raj. Yes, Dharini, Priyanshi, Goyal, you all are right. Very good. Okay, let's move on. Let's talk about Anglo-Maratha Wars. So when I'm using the word Anglo-Maratha War, it is a conflict between which two? Anglo-Maratha Wars, जब हम कह रहे हैं. So Anglo, मतलब, what do you mean by Anglo? Please tell me. Anglo-Maratha. So Maratha is clear, है ना? Anglo is British, Anglo-Saxon race कहते हैं ना. So British versus Maratha. अच्छा, हाँ, एक चीज और समझ लीजिएगा. जैसे Marathas were in modern day state, तो Maharashtra region, so establishment यहाँ था, लेकिन एक टाइम पर Maratha empire was very big, huge, तो इतना बड़ा भी हो गया था. I'm making a rough sketch. So once there was a time when Maratha empire had become very large. Okay, but of course main headquarter was there in Maharashtra. Now, so when we talk about it, जैसे Anglo-Maratha War है, so it is British versus Marathas. Similarly, in history we are having Anglo-Mysore War. So Mysore is in Karnataka. ठीक है. Similarly, we have Anglo-French War also. ये Carnatic Wars कहते हैं. France versus British हुआ था. And this primarily was there in Tamil Nadu region. ये वाला कर्नाटका region में ना, कर्नाटका, और ये वाला महाराष्ट्र region में. But why I'm discussing this? Because of MHSET exam, I have decided to choose this one. ठीक है. Otherwise, अगर जो history पढ़ते हैं तो सब पढ़ते हैं. Anglo-Mysore War ही पढ़ते हैं, Anglo-French War ही पढ़ते हैं. They study all. But Anglo-Maratha War, I have specifically chosen, and the reason is simple. Now, please tell me. So the most powerful ruler of Maratha Confederacy was actually Chhatrapati Shivaji Maharaj, है ना? So what was his capital? Please tell me this. He established a capital in the state of Maharashtra. What is that capital called? ये सब पूछा जाएगा. हाँ. Yes. Let me see how many of you. Yes, Raigad. Raigad Fort is there also. Yes, Namo Dharini. Very good. हाँ. Raigad. Yes, dear. Right. Raigad. कहाँ पे मिलेगा? It is actually somewhere Mumbai से थोड़ा सा दूर है. पुणे के पास भी नहीं है, but हाँ, यहाँ पे Mumbai, यहाँ पे पुणे है. Somewhere here you will find Raigad. ठीक है. Yes, and when you are talking about it, देखो originally क्या होता था, जो मराठा कन्फेडरेसी होती थी, उसमें एक जो किंग होते थे, छत्रपति, है ना, और उनके अंदर में there were 8 ministers. What are those ministers called? उनके लिए टर्म यूज किया जाता है. What is that term called? Please tell me. ये पूछा था एग्जाम में. So there was a king and there were 8 ministers, and there is a specific term used for those 8 ministers. वो 8 ministers के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, अष्ट प्रधान. वेरी गुड. यस, नामो धरणी. वेरी गुड. हाँ, तो अष्ट प्रधान इज देयर. लेट मी शो वेयर इज अष्ट प्रधान. आई हैव रिटन समवेयर. हाँ, यस. सो दिस इज अष्ट प्रधान मंडल, है ना. सो हियर इज पेशवा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंग. देन वी हैव अमात्य, फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव, होम सेक्रेटरी, मंत्री, इंटेलिजेंस, सेनापति. सेनापति नाम से पता चल रहा है. सुमन, दयाधीश, पंडित राव. पंडित मींस ऑफ कोर्स रिलीजियस हेड. सो दीस वर द 8 मिनिस्टर्स और 8 प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स ऑफ अ किंग. होता क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
the power of the king gets reduced and for all practical purpose पेशवा become the most powerful. ठीक है, तो पेशवा ही जो है ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम मराठा एम्पायर में सबसे पावरफुल हो जाते हैं. ठीक है, ठीक है, तो जस्ट हैव एन आइडिया, रफ आइडिया अबाउट इट. सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट पेशवा, और ये सब इतना नहीं याद रखिएगा तो चलेगा काम. ठीक है, हाँ. Okay, so here we are talking about that. So yes, we are talking about this. It comprised the realms of Peshwa and 4 other major independent Maratha states. It was established in 1674 by Chhatrapati Shivaji Maharaj as the Maratha, and that is recognized by Emperor Bahadur Shah and all. अच्छा, एक question और याद आ गया because these all are related with that. In his name, there is a railway station. Where is that railway station? And it has been designated as a very important site by a very famous organization. नहीं, सारे का रोल नहीं याद रखता था. No need to remember that, है ना? Yes, where we will find the railway station named after him. Mumbai में UNESCO World Heritage Site, right? So basically, it is called as Chhatrapati Shivaji Terminal, CST कहते हैं. Earlier, the old name was Victoria Terminal. Okay, and actually this is the nearest railway station for if you want to go to Gateway of India, or let's say Taj Hotel. I'm sure you must have heard about this. So the nearest railway station, hardly I would say 2 or 3 kilometers from that, you will find Chhatrapati Shivaji Terminal, earlier known as Victoria Terminal. The most important thing is that this railway station is a UNESCO World Heritage Site. ठीक है, ये रेलवे स्टेशन ही खुद यूनेस्को, बिकॉज जनरली हम लोग कोई इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप उनकी बिल्डिंग सर्च करोगे नेट पे जाओगे, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, सर्च इट ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल, यू विल सी द इमेज, और आपको देख ही लेगी वो ओल्ड स्टाइल बिल्डिंग है वो. ठीक है ना, बहुत आर्किटेक्चरल मार्वल यू कैन से. सो दैट इज व्हाट आल्सो यू शुड बी नोइंग. तो ये सब एमएस सेट में इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट. अब देखो कुछ फेमस, जैसे एक तो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द फेमस इंडिपेंडेंट स्टेट्स. जैसे एक है पेशवास. सो पेशवास वेयर ओरिजिनली फ्रॉम पुणे. ये सब मैच द फॉलोइंग हो सकता है, पूछ सकते हैं. ठीक है. सो द प्रोमिनेंट मराठा किंगडम या स्मॉल किंगडम, है ना. तो सिंधियास ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर इज इन मध्य प्रदेश, है ना. एंड खोलकर इज फ्रॉम इंदौर, है ना. इंदौर इज आल्सो इन मध्य प्रदेश. सो दिस एंड देन गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, ये याद रखना, एंड भोसलेज ऑफ नागपुर. ठीक है ना. So these are the things you should be knowing about. ठीक है, ये आपको 5 याद, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं, but these 5 you should remember. हो सकता है मैच द फॉलोइंग ऐसे पूछ दे कि पेशवास बिलोंग टू वेयर, तो पुणे, सिंधियास बिलोंग टू वेयर, ग्वालियर, होलकर फ्रॉम इंदौर, गायकवाड़ फ्रॉम बड़ौदा एंड भोसले फ्रॉम नागपुर. ठीक है. So that is what you should know. देखो ये मराठा एम्पायर एक टाइम इतना बड़ा था, है ना. Yes, here this is very much clearly shown, है ना. हाउस ऑफ गायकवाड़, हाउस ऑफ होलकर, है ना, हाउस ऑफ सिंधियास, House of Bhosles and Peshwas dominion and all. ठीक है. अच्छा, जो छत्रपति शिवाजी थे वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? Can anyone tell me which dynasty he belonged to? ये सब 5 में से किस में से बिलोंग करते थे? हाउस ऑफ होलकर, हाउस ऑफ भोसले, पेशवास डोमिनियन, हाउस ऑफ गायकवाड़, हाउस ऑफ सिंधियास. Which among them he belong to? ये सब पूछेंगे एग्जाम में. And I'm getting only one right answer. Yes, Namo, right. Mahendra, Nandini, you are right. हाँ, Bhosle dynasty. हाँ. Yes, Namo, very good. हाँ. तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. So this is what you should be knowing. 16 main rules are this is the period. ठीक है. और उनके बाद जो उनके सक्सेसर्स वगैरह उतना याद नहीं रखना जो काम की चीज है, because I know it's very difficult to remember all each and everything, है ना. अब देखो, we have to understand, yes, we have discussed शिवाजी, है ना, भोसले डायनेस्टी, carved out, etc. और इसमें रायगढ़ फोर्ट was his capital, है ना, that is what we have discussed. And capital of शिवाजी we have discussed, so it's Raigad. Let me show in the map. तो रायगढ़ फोर्ट, it's still there, है ना. 1674 में established it as the capital. तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ. This is Maharashtra, this is Mumbai, this is Pune. ठीक है. और यहाँ पर आपको मिलेगा रायगढ़. ठीक है. ओके. सो मुंबई से अगर आप पुणे जाओगे तो बीच में नहीं मिलेगा, सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर. ठीक है. सो इफ यू वांट टू गो फ्रॉम मुंबई टू पुणे, ठीक है, ट्रेन से जाओगे, सो यू विल हैव टू गो लाइक दिस, बट शायद रोड जो है ना ऐसे स्ट्रेट अप बन गया है, सो रोड इज स्लाइटली शॉर्टर. और यहाँ पर रायगढ़ फोर्ट मिलेगा.
ओके, प्रीवियसली द कैपिटल वाज इन शिवनेरी। अब एक बार चेक कर लेना नमो, प्लीज चेक द, हां शिवनेरी फोर्ट में ही वाज बॉर्न देयर, यस। उन्होंने अपना जो कैपिटल बनाया था वो रायगढ़ में बनाया था, ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो। अब एक दो चीज हम लोग पढ़ना वो ये, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली द रीजन व्हाई वी हैव सीन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। तो ये हम लोग समझेंगे कि पेशवाज एंड ऑल में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, सो बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, बालाजी बाजीराव टू एटसेट्रा, है ना। So let us first discuss about it. First discuss the first Anglo-Maratha War. तो पहले आपको ये बताना है कि कब हुआ। तो वो जनरली क्या होता है, you will realize one thing. जब भी ब्रिटिश का जो कॉन्फ्लिक्ट होता था ना, ब्रिटिश जो है ना, जैसे अगर हमारी कोई किंगडम है, इसमें आपस में लड़ाई हो रही है A वर्सेस B, you will realize it. एंग्लो-मैसूर वॉर, ये जो भी वॉर देखोगे उसमें ब्रिटिश वे वेरी स्मार्ट। अगर आपस में लड़ाई हो रहा तो एक को दोस्त बना लेंगे, आ जाओ तुम मेरे साथ, लेट्स हैव अ फ्रेंड, इनको बुला लिया और बी और ब्रिटिश मिलकर के ए को हराएंगे, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज वेरी एक्चुअली वेरी मच द टैक्टिक्स ऑफ द ब्रिटिश। जहां भी वो किसी भी किंगडम में देखते थे आपस में लड़ाई हो रही, बोले अरे वाह बड़ा अच्छा है, लेट्स मेक फ्रेंड वन ऑफ देम, है ना। सो द राइट आंसर हियर इज 1775. So B is the right answer. This is how they used to actually play. I hope you are aware. Yes, Safi, Nomani, Namo, Nandini, Diya, you are right. 1775 to 1782. हाँ, divide and rule. इसमें दो बहुत फेमस है और इसमें आई थिंक कोई एक पूछा हुआ भी है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ट्रीटी ऑफ सूरत। देखो सूरत और सालबाई, सो सूरत से शुरुआत हुई, सालबाई पे खत्म हुआ, याद रहेगा 1775 1782, प्लीज रिमेंबर इट। 70 मतलब दिस इज सूरत से शुरुआत हुई और सालबाई पे खत्म हुआ, ओके, दैट इज नाउ यू शुड बी नोइंग अबाउट। अब मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूं, बट एक मैं चूंकि बिगिन कर रहा हूं तो इसका अब देखो यहाँ पे भी देखोगे ये बेलिजरेंट्स है ना, यूकी वर्सेस मराठा कन्फेडरेसी ना, यहाँ पे देखो गौर से। So these are British officers, but there is one more. This guy is from Maratha Empire. देख रहे हो? And these are Marathas, right? तो उनके एक आदमी को नाराजगी थी, so there were some issues, and he went there, and he went और ये इन्होंने जो ट्रीटी की, that was called as Treaty of Surat, ठीक है, 1775 में, to start a war and all, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ because this one is slightly important, so we'll discuss it. देखो होता क्या है, first of all let us discuss, there is बालाजी विश्वनाथ, मैं आपको आइडिया देता हूँ। He was the पेशवा from 1713 to 1720, जिसमें इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। फिर उनके बेटा थे बाजीराव वन, आई हैव रिटन इट इन माय नोट्स सो दैट आई शुड नॉट फॉरगेट, ठीक है, 1720 से 1740, ठीक है। फिर उनके बेटा थे बालाजी बाजीराव, ये सब नहीं याद रखना है, जो हम बताएंगे उतना याद रख लीजिएगा, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ बस। 1740 से 1761, ठीक है। फिर उनके बेटा थे माधवराव, ठीक है। ये सबके टेन्योर नहीं याद रखना, मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट। 1761 टू 1772, फिर इनके भाई थे, ब्रदर, है ना, नारायण राव 1772 से 73, फिर इनके बेटा थे माधव नारायण राव, ठीक है, 1774 से 95, ठीक है। होता क्या है, देखो कई बार ऐसे होता है कि देयर इज कॉन्फ्लिक्ट फॉर सक्सेसर, कि हम बनेंगे राजा, हम बनेंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर या पेशवा, ठीक है। होता ये कि बाजीराव वन के जो बेटा होते हैं सन, मतलब एक सन तो ये हो गए और दूसरा सन हो गया रघुनाथ राव, है ना, ओके, 1773 से 74, ठीक है। अब ये कहते हैं, ये हमेशा चाहते हैं कि हम बने पेशवा नेक्स्ट, लेकिन बाजीराव वन के बाद ये बन जाते हैं बालाजी बाजीराव, उसके बाद इनके बेटा बन जाते हैं माधव राव, अगेन ही इज नॉट वेरी हैप्पी। जब इनकी डेथ होती है तो ये बन जाते हैं नारायण राव बन जाते हैं। अब इनको बुरा लगता है, एंड ही इट इज सेड दैट ही गॉट हिम किल्ड, कि मेरा नंबर कब आएगा, आई शुड बी द नेक्स्ट पेशवा, व्हाई दीस पीपल आर बिकमिंग पेशवा, ओके। जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी बच्चे होते हैं, लाइक पोस्ट ह्यूमस सन होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, फिर चाइल्ड होता है, सो पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड होते हैं, इनको राजा पेशवा बना दिया था, बट हाउ कैन ही बी अ पेशवा चाइल्ड, सो इट इज सेड दैट he is made पेशवा, but for all practical purpose Nana Fadnavis was actually the ruling it or controlling the, ठीक है ना। जब तक वो छोटे थे, जब वो बड़े हुए तब उनको दे दिया गया, ओके। फिर इसके बाद जो है माधव नारायण राव के बाद
एक्चुअली फिर जो है बाजीराव 2 बनते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड बाजीराव 2। ओके, अब देखो यही है जो द वन हु वांटेड टू बिकम द किंग, ये जो है ना, यही साहब, दिस एक्चुअली मेक्स अ डील विद ब्रिटिश बिकॉज ही वाज नॉट वेरी हैप्पी कि हमको क्यों नहीं बनाया जा रहा है पेशवा। ओके, एंड दैट इज व्हाई अगर यहाँ पे देखोगे, सो रघुनाथ राव डिड अ डील, देख रहे हो, दिस इज रघुनाथ राव हैविंग अ डील विद ब्रिटिश कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। इज इट क्लियर? है ना? सो ईयर्स याद रखिएगा प्लीज, ये सब मैच द फॉलोइंग पूछते हैं, ये सब नहीं मिस होना चाहिए एग्जाम में, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट। इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? तो ट्रीटी ऑफ सूरत पढ़ोगे, है ना? सो है ना, ये हो गया रघुनाथ राव, है ना? ये जो सवाई माधव राव है ना, यही है, ये इनको माधव राव को, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बना दिया था। सो दैट इज द केस, नाना फडणवीस इज रूलिंग, है ना? सो रघुनाथ राव गोस टू द ब्रिटिश एंड साइंस ट्रीटी ऑफ सूरत, और उसमें सैलसेट और बैसेट ये सब जगह है मुंबई में, वसाई आज कहते हैं मुंबई को, मुंबई में एक जगह है, सैलसेट ये सब उनको दे देते हैं, बॉम्बे को, मुंबई ब्रिटिश को, इन एक्सचेंज फॉर द सपोर्ट, क्या उनको सपोर्ट कीजिएगा नॉट, एंड दैट इज हाउ द वॉर हैपेंस। ठीक है, सो वॉर होता है, उसके बाद क्या होता है, देखो एक और इशू होता है, इशू ये होता है कि यहाँ पर लोकल जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं वो अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं रघुनाथ राव के साथ, है ना, the one who was revolting against the other पेशवास। लेकिन जो मेन कैपिटल होता है ब्रिटिश का तो कलकत्ता होता है ना, so actually the main governor general was not very happy कि आपने साइन क्यों कर लिया डील एंड ऑल, that was also the case, हमें उतना डिटेल नहीं जाना हूं। so that is how then again what happens is जो सुप्रीम काउंसिल होता है बंगाल में बैठ के, वो बोलता है कि नहीं हम सूरत वाली ट्रीटी को नहीं मानेंगे, है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ भी होगा, they annul the Surat Treaty 70 next year। और फिर क्या होता है, रघुनाथ राव जिसके साथ जो यहाँ पे डील हुआ था ब्रिटिश के ऑफिसर्स का, and this was cancelled and all later on, and finally 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई होता है, this ends the first Anglo-Maratha War। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर याद रखिएगा 1776 नेक्स्ट ईयर आफ्टर ट्रीटी ऑफ सूरत इट हैपेंस, और जो ब्रिटिश सुप्रीम ब्रिटिश काउंसिल कलकत्ता में बैठे, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट द ब्रिटिश ऑफिसर्स डिड इन बंगाल, इन बॉम्बे। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है ना? देन फाइनली जो ट्रीटी ऑफ सालबाई होता है 1782 में, याद रखिएगा ये पूछा था, दिस लेड टू द स्टॉपिंग ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट यू शुड नो। तो फाइनली ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है ना, दैट इज व्हाट कि मतलब इनको जो है रघुनाथ राव को उनको पेशवा नहीं बनाया जाता एक तरह से, दैट वाज एक्सेप्टेड देयर। वो दूसरा पुरंदर है, ठीक है, देयर आर मेनी पूरे ट्रीटी ऑफ पुरंदर, है ना, नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड। The next is the second Anglo-Maratha War। ठीक है, अब मैं बताया था उसमें पुरंदर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है सालबाई, ट्रीटी ऑफ सूरत एंड सालबाई, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट। तो पुरंदर छोड़ भी सकते हो। ठीक है, 75 82 75 में शुरू हुआ वॉर, 82 में एंड हुआ। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एंग्लो-मराठा वॉर। These two are more important because पुरंदर मैंने बहुत रेयरली किसी एग्जाम में पूछते हुए देखा है इस कॉन्टेक्स्ट में, सो यू कैन स्किप इट। ट्रीटी ऑफ सूरत एंड सालबाई याद रखिएगा। ठीक है, who was the GGI? I think that is not enough important. Okay, that you can skip. The next is second Anglo-Maratha War was fought between, कब हुआ था? Please tell me. Everyone, please answer me. The right answer is 28 से 28 B is the right answer. Yes, yes number right। हाँ, इससे पहले वाली जो डील हुआ था इसमें साइन कर लिए गए थे फॉर द नेक्स्ट 20 years will not be fighting a war etc, ये सब हो गया था, तो कुछ हद तक पीस था 20 साल तक, है ना, फॉर द नेक्स्ट 20 years it was peace। 1782 से 20 साल 1802 तक तो एटलीस्ट पीस था। 1803 में अगेन दैट कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड। कोई विक्टर नहीं था फर्स्ट वॉर में। some claim that yes we won but I think there are different conflicting reports, but कोई नहीं था, they actually लॉर्ड हास्टिंग और अदर्स के साथ डील वगैरह हो गई। ठीक है, खैर इसमें भी अगर आप देखोगे समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग। बाजीराव 2 इज विद ब्रिटिश, और यहाँ पे देखोगे यशवंत राव होलकर इज अगेंस्ट। ठीक है, और यही बाजीराव 2 थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में ही गोज अगेंस्ट ब्रिटिश, देखना। ठीक है, ओके, एक रफ आइडिया होना चाहिए। अगेन दैट इज द सेम थिंग अगर आप देखोगे। सो
ब्रिटिश बट यस सपोर्टेड में मराठा कॉन्फेडरेसी में ये बाजीराव टू है ना, ये यहाँ हो गए और वर्सेस यशवंतराव होलकर है ना, सो होलकर वगैरह इधर हो गए, ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो है ना। एंड देन अगेन बैटल ऑफ पूना, इसमें आई थिंक ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये ट्रीटी ऑफ बैसिन है, इसको कहते हैं डेथ नेल ऑफ द मराठा एम्पायर, दैट इज व्हाट द वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड एंड ऑल। तो ये आप जस्ट ट्रीटी ऑफ बैसिन याद रखिएगा, वही वासाई, एक्चुअली बैसिन लिखते हैं वो वासाई जगह है, दिस इज इन मुंबई दिस प्लेस, ठीक है। 1803 वही से 1802 में हुआ था ना दिस इंसिडेंट विद द ब्रिटिश इंडियन कंपनी सीनिंग टेरिटरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सब्सिडियरी फोर्स एंड ऑल, ठीक है। तो बाजीराव टू जो है he actually did a deal with British against यशवंतराव होलकर, ठीक है, that is called as Treaty of Basile, okay 1802 1803 के आसपास, okay 1802 में है ना। तो बाजीराव टू did a deal with British, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, okay, और दिस वाज डिसाइसिव एम्पायर है ना, यही मेन रीजन था शायद जिसकी वजह से the Maratha Empire actually declined and all, that is what you should know, बस इतना याद रखिएगा। 1802 Treaty of Basile, बाजीराव टू did a deal with British and this was the beginning of course of Second Anglo-Maratha War है ना। so ये Second Anglo-Maratha War हुआ, so ये सब डील है, इतना डिटेल तो I don't think they'll be asking है ना, so that is what you should know। और उसके बाद क्या हुआ कि the war happens and all, इसमें इतना कुछ याद रखने का नहीं, और ये बहुत सारे ट्रीटीज हुए थे, सब याद रखना पॉसिबल नहीं है, that is what you should know। finally 1805 में ये भी ट्रीटी ऑफ राजघाट इज आल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत कम ही एग्जाम में देखा है पूछते हुए, बट बैसिन वाला देखा है, it started with treaty of बैसिन, ठीक है ना। so finally there was agreement was reached and in the 1805 this was also with the help of this treaty the power got stopped, ठीक है। हालांकि ब्रिटिश जो है it is said कि ब्रिटिश वन politically and all, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी ट्रीटीज है, इतना डिटेल नहीं जाना है, ठीक है, that is what you should be knowing। और आर्थर वालेस से एक ब्रिटिश ऑफिसर था उस टाइम पे, काफी फेमस हो गया है ना, दिस बंदे का नाम कभी-कभी एग्जाम में मैंने देखा है, कहीं कहीं पूछते हैं, ठीक है। The next one is the Third Anglo-Maratha War that was fought in which year? Please tell me। 1817 से 19, 1829 से 51, 1818 से 1831, 1881 से 1891। Right answer is option A 1870 से 1890। Yes, Namo Mahendra Nandini, you are right है ना। So this was happened और ये लास्ट था war and this led to in fact the collapse of the Maratha Empire। So इसमें पिंडारीज वगैरह वर्ड भी लिखा आता है कि ऑपरेशन बिगेन अगेंस्ट पिंडारीज। So the concept of पिंडारीज was there in Third Anglo-Maratha War, ठीक है। So ये मिलिट्री इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मराठास, रोहिलास, पठान, खालसे, इसके लिए वर्ड यूज किया था, प्लीज रीड अबाउट इट, इट वाज देयर इन मुगल आर्मी, मराठा आर्मी आल्सो। So पिंडारी वॉर भी जो है ना थर्ड एंग्लो-मराठा वॉर से एसोसिएटेड है। So just remember these facts, ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाना है। अगर आप देखो इस टाइम पर सारे मराठास एक साथ, and here British East India Company supported by Hyderabad state के आसफ जाट was there, okay। तो यहाँ पर मराठा सॉरी यहाँ मुंबई बेस है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर मराठा और ब्रिटिश वेयर देयर इन कलकत्ता रीजन है ना, सो ब्रिटिश यहाँ पे मैं रफ बता रहा हूँ, निजाम ऑफ हैदराबाद यहाँ पे निजाम से और so they did now second in the Third Anglo-Maratha War, so this was on one side versus the Marathas and all, that is what नहीं स्टार्टिंग ईयर नहीं, कब से कब तक हुआ ये याद रखना, ठीक है। so 1870 से 1890, that is what you should know, ठीक है, ओके है ना। पेशवा बाजीराव टू's forces supported by those against the East India Company है ना, और दैट वाज टेकन। हाँ, तो ट्रीटी ऑफ बैसिन जो हुआ था 1802 में, उससे बहुत सारे पावर्स ले लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, वही जो बिगिनिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो बाजीराव टू जो है ना बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, ऑल्दो बाजीराव टू इन सेकंड एंग्लो-मराठा वॉर had fought with the ब्रिटिश के साथ थे, but थर्ड एंग्लो-मराठा वॉर से पहले एक्चुअली he was not very happy and he actually decided to fight against British, but finally जो है the last पेशवा थे बाजीराव टू, the last पेशवा, he was not very happy with British, finally he decided to wage a war and but unfortunately the war was not successful and he had to he was defeated and he was surrendered and was pensioned off, pension वगैरह दिया जाने लगा, आप surrender करके चले जाइए, and that is how actually it is said that it was led to the complete collapse of Maratha Confederacy, okay। So these are the things I have discussed it, I think that is more than enough, ठीक है ना। This ended the
rule of Peshwa, Third Anglo-Maratha War, है ना? So I think it's clear. Is there anything to ask? मतलब मैंने जितना जरूरत था उतना मैंने बता दिया, ठीक है? Otherwise, if we keep on telling, there are lot of things, बहुत छोटी-छोटी महीन और भी बहुत सारी चीजें, but उतना आपको नहीं जानना है. Now today this was an article. Now you'll be thinking, sir, अब तो एग्जाम में अब थोड़ी पूछेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, but he was ill for many days, for many months, and that is why this can also be asked. Now I have one question. So he's a pope, he died. So he belonged to which religious Christian denomination? Really appreciate this class. Okay. Thank you. Welcome, Dharini. I'm happy that you have liked the class. Please tell me, आज ही की न्यूज़ है, अभी थोड़ा देर पहले न्यूज़ आई थी, Pope Francis died. He is actually the head of which religious denomination? I'm waiting for some more response, Catholics. Yes, Dharini and Priyanshi Goel, you're right. He's not from Jews. He's from Christianity. Okay. No, Christianity में there are 2-3 famous sects. One is called as Roman Catholic. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Let me. थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ because this is he has been in the news. So for many months he was ill. Christianity में there is one called as the oldest version is called as Roman Catholics. अगर आपने NCERT class 11 12 पढ़ा होगा तो I'm sure you must be aware of it. The next is Protestant, which arose as a result of a revolt against Roman Catholics, है ना? I'm sure you must have heard about Martin Luther and all. एक Eastern Orthodox Church भी होता है, but Eastern Orthodox, but that is not very important. But ये दोनों काफी famous होते हैं ना? और भी होता है Anglican Church and all. These two are the main actually sects in Christianity. So Roman Catholics के जो head होते हैं, which is in Christianity, is called as Pope. ठीक है, Pope Francis. He was the Pope and he died. पूरे all over world में Roman Catholics के जो head होते हैं उनको Pope कहते हैं. Is it clear? So he belonged to Christianity, not Judaism. Jews के head नहीं थे. ठीक है, please be careful. Okay. और where was his seat? मतलब कहाँ बैठते थे, कहाँ उनकी office या main headquarter where it was? And I hope you can answer. तो हाँ, देखो ये यूरोप है, यूरोप में इटली है. इटली की कैपिटल रोम है. You'll be surprised to know if you do not know that within the city there is a country. Vatican City is a country. शहर के अंदर एक country declare कर दिया गया है. Okay, this is the smallest country and all. और ये बहुत छोटा सा है, एक शहर से भी छोटा है. ठीक है, hardly I think 5 kilometers का diameter होगा, 10 kilometers. ठीक है, yes, Vatican City very good, smallest country भी कहते हैं. तो इसी में Roman Catholics, और आप समझिए होगा रोम से Roman Catholics है ना. So Roman Catholics ही world over head है. That is what you should be knowing about. ठीक है. So ये आपको पता होना चाहिए. हाँ, अच्छा एक चीज और है, ये किसने लिखा थी? कई बार एग्जाम पूछा जाता है. I am asking because there is a reason. And the person who wrote X, today is his death anniversary. So आज मैं ऐसे अखबार में देखा, हमको नजर पड़ गई कहीं, तो मैंने कहा चलो ये पूछ देते हैं. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा. हाँ, मोहम्मद इकबाल, वेरी गुड, मोहम्मद इकबाल. यस, साफी नमो यू ऑल राइट. और एक और लास्ट बता देना, ये भी मैं कई बार देखा हूँ पूछते हुए एग्जाम में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. सरफरोशी की तमन्ना, दिस वाज रिटन बाय होम. ये भी मैंने कई सारे प्रोमिनेंट एग्जाम्स में देखा है पूछते हुए. Who wrote this? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. किसका लिखा हुआ ये मैंने कई सारे एग्जाम में देखा है, मतलब स्टैंडर्ड गवर्नमेंट एग्जाम में. चंद्रशेखर, नॉट चंद्रशेखर, उन लोगों ने पढ़ा था राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने. राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में और चंद्रशेखर के बारे में कि they actually read it, they popularized it, you can say, but it was written by someone else. Bismillah Azimabadi, बिस्मिल अजीमाबादी. ठीक है, अजीमाबादी. ठीक है, एंड आई होप यू आर अवेयर दैट अजीमाबाद जो है पटना को कहते थे.
पटना का एक नाम पाटलिपुत्रा था, एक अजीमाबाद भी था, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है, हर जगह आंसर यही मिलेगा आपको। बिस्मिल अजीमाबादी वाज द वन हु रोट दिस। इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, ये सब, ठीक है। ओवर देयर इन हिंदुस्तान, काकोरी कांड एंड ऑल, काकोरी कॉन्स्पिरेसी एंड ऑल, हाँ एचएसआरए के से रिलेटेड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो, बट द रिटन अगर पूछा जाएगा दैट शुड बी द आंसर, ठीक है। फाउंडेड एक बार देख लीजिएगा, ये सारे लोग थे इसमें से हु वाज द मेन पर्सन टू, बिकॉज़ एचआरए को बाद में एचएसआरए करने में इनका हाथ था, भगत सिंह का, ठीक है। So the word Hindustan Republican Army was later changed to Hindustan Socialist Republican Army by Bhagat Singh. So people associated with that were Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Chandrasekhar Azad, सब HSRA से associated हैं, ठीक है। एक बार फाउंडर देख लेते हैं, फाउंडर ऑफ HRA, हाँ इन्हीं तीनों का नाम आता है, सुखदेव थापर, चंद्रशेखर आजाद और सचिन सन्याल, ठीक है। भगत सिंह का भी नाम है कहीं कहीं लिखा हुआ, ठीक है। Okay, so we are ending this class here. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.